The track pant waist is curved and cannot be measured with a rigid 15 centimeter scale. A measuring tape is the best tool to measure the waist of a track pant. A measuring tape should be used to measure objects with curved surfaces. They are commonly used by tailors to take body measurements. Using a small scale to measure long objects, like the keyboard, can cause errors in measurement. A meter rod is a better tool for measuring longer objects, like the keyboard or a wooden table. Meter rods are often used by cloth merchants to measure cloth. A 15 centimeter scale is best for small and rigid objects, like a pencil case or a small container. Choose the appropriate measuring tool to measure the following object. These are the measuring tools that we will use for measuring the certain objects. After choosing the correct measuring tool, let's use it to measure the dimensions of this geometry box. Here are two instances of a 15 centimeter scale being used to measure the length of this geometry box. Is the object being measured correctly in both these instances? Discuss in class before you continue. In both these instances, the tool is placed incorrectly. Here, the scale is held slant. तो अगर हमें ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ मेजर करनी है तो हमें स्केल इस तरह से नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे स्केल क्या है, स्केल स्लैंटली पुट करा गया, ठीक है, टेढ़ा पुट करा गया. While measuring, always place the scale parallel to the side being measured. जो साइड आपको मेजर करनी है हमेशा उसके पैरेलली स्केल को रखेंगे. Is it clear? Here, one end of the scale is chipped off and the zero mark is not visible. If the zero mark or start point of the scale is not visible, begin with the next mark visible on the scale. On this scale, the next mark visible is the 1 centimeter mark. To get the actual length, subtract the length up to initial visible mark from the reading for the length of the object. तो क्लास, ये हमने क्लास में डिस्कस करा था कि जब हमारा जीरो मार्क ब्रेक हो, जब हमारा जीरो मार्क ब्रोकन हो, ठीक है, जीरो मार्क यहाँ पर आप देखिए जीरो मार्क ब्रोकन है, यहाँ पर जीरो जो मार्क है चिप्ड ऑफ है. तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे इसकी? तो जीरो के बाद जो भी मार्क हमें क्लियरली विजिबल हो, जीरो के बाद जो भी मार्क क्लियरली विजिबल हो, जैसे जीरो के बाद 1 हमें बहुत क्लियरली विजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे मेजर करना और जहाँ तक भी मेजर कर होता है वहाँ तक मेजर करेंगे. उसके बाद अगर हमें एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनल रीडिंग. ठीक है, इसी तरह से निकालो कि लेंथ कैसे निकलेगी, रीडिंग फॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट
जितनी भी लेंथ आ रही है ऑब्जेक्ट की सब 4 से 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारी रीडिंग फॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 14 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे हम लेंथ अप टू द इनिशियल विजिबल मार्क। जो इनिशियली हमें मार्क विजिबल है दैट इज 1 सेंटीमीटर, विल सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू और हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी ऑब्जेक्ट। Here, the reading for the length of the geometry box is 18 centimeter and the initial visible mark is 1 centimeter. So, the actual length of the box is 18 centimeter minus 1 centimeter, which equals 17 centimeter. Positioning the measuring tool correctly alone will not guarantee correct measurement. You should read the measurement on the scale correctly. Reading a scale from one side will not give you a correct reading. A scale should always be read by positioning the eyes right in front of the mark to be read. Look at this person trying to measure a curved vase with a 15 centimeter scale. She should be using a measuring tape. But what should she do if she does not have a measuring tape? Discuss this before continuing. If you don't have a measuring tape handy, you can use a string and a 15 centimeter scale. Tie a knot at one end of the string. This becomes your zero mark. Next, align the string along the length of the curved surface to be measured. While doing this, ensure that the string is taut. On reaching the end of the vase length to be measured, mark this end with a pen or marker. Now you can measure the length from the knot end to the marked end using a 15 centimeter scale to get the length of the vase. मेजरिंग लेंस दैट कैन बी स्ट्रेट लाइन को भी मेजर कर सकते हैं, कर्व लाइन को भी मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या अवेलेबल है, दैट आर मीटर स्केल, मीटर रोड और फिर मेजरिंग टेप, ठीक है। और करेक्टली मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू होल्ड द स्केल करेक्टली अलोंग द लेंथ दैट इज बीइंग मेजर्ड, ठीक है। और कर्व लाइन के लिए हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है दैट आर स्प्रिंग विद मार्किंग और फिर मेजरिंग टेप। और अगर करेक्टली मेजर करना है तो वी कैन टाई द नोट एट वन एंड होल्ड इट करेक्टली अलोंग द कर्व सरफेस। फाइन, तो क्लास आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज आपके लिए इतना ही। तो आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोगों ने कीवर्ड्स
लर्न करने थे चैप्टर 1 आई थिंक आपको मैंने रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए दिया था। तो आज आप लोग चैप्टर 1 को ही दोबारा रिवाइज करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख कर देखेंगे चैप्टर 1 के, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।